मुबारक है सीरीज जीतने पर आपको। डॉक्टर रज़ाक पर आपने आज एतमाद किया, सुपर ओवर में भेजा और आखिरी क्रूशियल ओवर जो था वो आपने रज़ाक से बनाया था। क्या आपके ध्यान में कहते हैं 2 साल पहले उन्होंने आपकी मतलब इंटरनेशनल T20 मैच किया था 2010 में, आज इतना उनका एतमाद में नहीं, क्या वजह है? देखें, इस टीम के अंदर तमाम जो भी प्लेयर्स हैं, मुझे उन पे सब पे कॉन्फिडेंस है एज ए कैप्टन, और मैं यही चीज़ तमाम प्लेयर्स में देखना चाहता हूँ और मैं यही ट्राई कर रहा हूँ एज ए कैप्टन के तमाम प्लेयर्स अपने आप को उस मैच विनिंग मोड में वापस लेके आएँ। इसलिए मैं हर बंदे को उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसके मुताबिक उसको यूज़ कर रहा हूँ, और आई थिंक तमाम प्लेयर्स कॉन्फिडेंस वाइज इस टीम में जेल हैं। तमाम लड़के अपना जो कॉन्फिडेंस के साथ अपना जो खेल है वो खेल रहे हैं। अब्दुल रज़ाक हो या नासिर जमशेद हो या इमरान नज़ीर हो, ये तमाम वो प्लेयर्स हैं, रज़ा हसन हो, ये तमाम वो प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने आप को मनवाना चाहते हैं, और मैं उनको एक कंफर्ट लेवल प्रोवाइड कर रहा हूँ एज ए कैप्टन, और वो उसमें बहुत आउटस्टैंडिंगली मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और आज के मैच में अब्दुल रज़ाक पे जो मैंने ट्रस्ट किया, आई वॉज वेरी श्योर कि ही कैन डू दैट, और उन्होंने अपनी जो मैच विनिंग एबिलिटी है उसके मुताबिक परफॉर्म किया। जी, कभी उतार चढ़ाव है, कैसा देखा आपने आज के मैच में? देखें, ये मेरे लिए भी और तमाम टीम के पूरी टीम के लिए बड़ा मज़ेदार मैच था। हम सब ने इसमें बड़ा एंजॉय किया अंडर प्रेशर, और ऑब्वियसली अंडर प्रेशर जो बंदा परफॉर्म करता है उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होता है। और आई थिंक इस पूरे मैच को अगर आप देखें तो तमाम प्लेयर्स ने अंडर प्रेशर रिस्पॉन्ड किया, जो कि पाकिस्तान टीम का ये बड़ा अच्छा साइन है कि अंडर प्रेशर हम लोग अपने नर्व्स को कंट्रोल करके अच्छी और बेहतर परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। जी, जनरली यही होता है कि विनिंग कॉम्बिनेशन को लोग हाथ में लगाते हैं, बट आपकी जो मैच है उसमें क्या आप सोच रहे हैं, जैसे कमी हो गए या क्या आपका प्लान है कोई देखें, डेफिनेटली मैंने पहले भी बताया था कि हम लोगों को इस सीरीज़ में जो डिज़ायर रिज़ल्ट है वो तो हर मैच जीतना है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वी विल डेफिनेटली ट्राई समथिंग जिसके साथ तमाम प्लेयर्स जो हैं वो अपने मेगा इवेंट से पहले प्रैक्टिस में आ जाएं, और ताकि तमाम प्लेयर्स को इंटरनेशनल मैचेस में जो रिदम है वो वापस रहे, ताकि किसी भी वक्त किसी भी टीम के खिलाफ जिसको भी इस्तेमाल किया जाए वो कॉन्फिडेंस के साथ हो। तो अभी मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन डेफिनेटली वी विल ट्राई टू गिव चांस टू सम ऑफ द प्लेयर्स हु आर सिटिंग इन द बेंच। यस गॉड, just describe your emotions. It was a really roller coaster match. At one point, it seemed that Australia had it in their bag, had it in the bag, and then that turnaround. And just live through the emotions of the super over as well. Well, I think to be very honest, I was very confident, and I was all the time having belief that we can win this game, because I believe on my boys. They are exceptional with their talent, and I'm really pleased the way they are responding to my calls. Whatever I'm asking them, they are delivering. They are trying to deliver according to my plan. The plan is obviously always to win the game, and I think it is great sign for me as a captain, and also for the Pakistan cricket team that everybody is responding well under pressure, especially because this game can be anything. But I personally feel everybody responded well. Abdul Razak at the end, Saeed Ajmal, Raza Hassan, Nasir Jamshed with his batting. So I personally feel for me as a captain it is very pleasing the way the boys are responding to me every time I ask them. yes Brian. अजमल ने मैन ऑफ द मैच लेते कहा कि उसके शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम है. Is it something to be worried about, or is it something normal? Can you just tell us about the injury? असल में उसका जो शोल्डर था वो कोलैप्स हुआ थोड़ा सा, इसकी वजह से उसने आई वांटेड टू यूज हिम फॉर द लास्ट ओवर जो कि डिसाइडेड था, लेकिन क्योंकि उसमें थोड़ा सा पेन था तो फिजियो ने ये हमें सुजेस्ट किया कि उसको ना करवाया जाए, लेकिन आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी मेजर कंसर्न, बट होपफुली इन 1 or 2 days he will recover. Yes, Captain, you spoke about momentum in the last game. Obviously, you've won a really close game. You've come out on top. How much will this do for the side, a victory like this against an Australian team in those circumstances? Well, it's a great sign. I mentioned earlier, as a captain, I'm very pleased the way the boys are responding under pressure, and especially the matches like that when you win, you always get the right feeling back into the dressing room, and everybody is very confident to do the job for the Pakistan. Whenever I ask for somebody to do the job, everybody is there. So this is something as a captain I feel very proud of my team, the way they are responding under pressure, especially this game, and also the whole series they were outstanding.
and hopefully they will from here on they will continue this performance for the next match and also for the mega event. Captain, I know you mentioned in Urdu about thoughts you had for the third match. Can you possibly explain in English your early thinking about giving the other lads perhaps a go at the bench lads? Well, definitely that's what I've said. I mentioned earlier, we might try a couple of things before the mega event, because I believe everybody should get a chance to get into it. And I personally feel we will definitely consider, but cannot tell you at the moment what it will be. But definitely we will give chance to some of the players who have been sitting in the bench. I know they are good enough. Some of the they have done well and they are sitting outside. This is a great sign for me as a captain. They are responding well, even though they have performed well. But I think this is the time for them also to give it back, and inshallah we will try it level best. It was the first time that this ground got jump back was full, and it happens only when the team wins. Would you like to say something to that? Well, definitely, I'm really happy to see the crowd, the way they come up in a large number and supporting Pakistan. And all I can say, I really want to see that in every game, because we are not using any home territory from the last 3 years, and the boys are really missing the home crowd as well. But this time, we really felt like we are playing at home. Yes, please. So you might have spoken that stage at just before there. I was just trying to pick it up. But did he hurt his shoulder, and were you saying he's perhaps going to miss a couple of days, or is he okay for games? Yeah, he will be. He was not feeling well. That's the reason we decided to go with Omar Gul, because he was having a little bit pain in that. That's the reason physio suggests me not to go with him. And I personally feel he will recover in 1 or 2 days, because it's not a big injury, but he will recover from that for the next game. Yeah, it's a left shoulder. That's the reason we thought not to give him anything this time, so he will recover in a couple of days. Yeah. You've used Hassan Razak quite a lot against. Sorry? You've used Hassan Razak quite a lot against a very strong team. Has the idea been to get him more confidence? I think he's shown a great character. There's no doubt. As a bowler, he's looked like very mature, and he got talent. There's no doubt. But it will be good for me as a captain and for the Pakistan. If somebody is performing that well, and we all know that the Shahid Hafeez is the one who is always the match winner for the Pakistan. So it will be great for me as a captain to having that option. But there's no doubt he's performing well, and he got great talent. Yeah. Could we just talk about your decision to back him on the Super Over and how you felt about his performance he did in that Super Over? Well, I was very sure. They were. Whole team was. I can send everybody in that situation. But at that time I just felt like Umar Ikmal is the one who can smash the ball anytime, and Abdul Razak also got the ability to hit the ball. The older ball anywhere he wants. So that's the reason I just thought to go with that. And Kamran Akmal, because he is in a great form, but I couldn't send him because he was cramping a little bit. That's the reason whatever decision I'm taking, it just working for me. Yeah. Captain, on behalf of BBC World Service Urdu, could you explain in Urdu, looking ahead to the World 2020, you've got Bangladesh and you've got New Zealand in your group. How do you feel about those two teams looking forward to that tournament in Urdu? I think मेरे लिए पहले ये है कि जो तीसरा मैच है ये खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हम इसको जीतते हैं तो फिर वही जो मैंने पहले बात की थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि एक अच्छा मोमेंटम जो है वो हम लेके वर्ल्ड कप में वर्ल्ड T20 में लेके जाएंगे. एक्सक्यूज़ मी. इसमें हमें पता है कि जो वर्ल्ड कप में हमारा जो पूल है उसके अंदर न्यूजीलैंड और बांग्लादेश हैं, ये दोनों बड़ी अच्छी साइड्स हैं T20 में. लेकिन यह है कि हम लोग अपने लिए बिल्कुल सिंपल अपना टारगेट रखा हुआ है कि हम एक मैच सिर्फ खेलते हैं और उसको जीतने की कोशिश करते हैं. सो आई थिंक पहले हमारा जो टारगेट है वो तीसरा मैच है, और उसके बाद जब हम आगे जाएंगे विद गुड मोमेंटम इंशाल्लाह, और ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा मोरल बूस्टिंग होगा.
Well, to be very honest, I don't think so, because he's still not feeling that good, and I don't want to take any chance, because I want him in the World Cup. He's a match winner for Pakistan, there's no doubt. So I don't think so he will be available, but we have to see. If he recovers well, he might, he's always, the first choice for me as a captain. But at the moment, I don't think so he will be available for the third game as well. Yeah. मोहम्मद समी आपके साथ है, T20 में आप जा रहे हैं? देखिए, मैंने पहले बताया कि मोहम्मद समी हो या यासिर अरफात हैं, इन दोनों लड़कों ने पिछले जो मैंने श्रीलंका में आज हमने सीरीज़ खेली थी उसमें बेहतरीन बॉलिंग की थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस थी, डिफरेंट टीम थी, तो इसके हवाले से वो उनको चांस नहीं मिल सका। लेकिन डेफिनेटली मैंने पहले भी बोला था कि मैं कोशिश करूँगा तमाम प्लेयर्स को बड़े मेगा इवेंट से पहले एक अच्छा मोमेंटम मिल जाए, तमाम प्लेयर्स जो हैं वो अपना जो है रिदम वापस वो ले आएँ। तो अभी मैं ये कह नहीं सकता कौन खेलेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा एज ए कैप्टन कि तमाम प्लेयर्स को चांस मिले, ताकि बड़ी जो सीरीज़ है, जो मेगा इवेंट, उससे पहले तमाम प्लेयर्स जो हैं वो अपने इंटरनेशनल फ्लो में वापस आए। I believe there are no more questions. Thank you so much. Thanks a lot. Thanks. Thanks, Hafeez. Really appreciate that. Thanks. Thank you. Mr. Manager. Thank you.